ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ा अभी गैप लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबको। मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए मैं आपको ये भी एनेबल कर देता हूँ, एंड देन आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर दीजिएगा जो भी है प्लीज, ताकि मैं आपको पूछ सकूं। हाँ, अभी सबको माइक है, बट प्लीज रिमेन ऑन म्यूट। मैं आपका नाम ले लूंगा और आप पूछते जा सकते हैं, एक ही मिनट बस। मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ सो दैट आप हाँ, डन, आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन। आई विल स्टार्ट विथ हाँ, मिस्टर चंद्रू, आई थिंक आई कैन स्टार्ट विथ स्टार्ट। मैं रैंडमली स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी कोई प्रायोरिटी नहीं है। Yeah. Sure, हाँ Patel. जी, यस गो। Hi, Patel. Yeah. So, okay, I had already tried one algo. Okay, like you know about the con man, right? I already tried that. Okay. So they were actually I created my own strategies, which I am doing currently practically. So I created in the algo, but what I found was it was not executing properly. Like stop loss is not triggered, or it is not correctly placing the price. All those things I faced actually in the algo. Sure. Okay. Another thing, as you are saying, the capital itself, we are taking 100% of the capital as a risk. Correct? Yes. That's what you are explaining. So that itself, the strategy is wrong, right? I mean, if we are doing from logical angle, if 100% we are capital taking at the risk, then it is risky also, right? Understood. What do you think? I'll ask you a slightly different question. On the same note, I'll ask you a slightly different question. Let's say, Yeah. so what we have said is, we said the base capital required would be 3 lakhs. What if we told you the base capital required was 6 lakhs or 10 lakhs? Okay. Think about it from that point of view. We could have happily said that the base capital required would be 10 lakhs. Okay. Okay. If it is 10 lakhs, then the drawdown would only become 25%, isn't it? And then even for 10 lakhs also, the net return would still be much better. Even for a 10 lakh capital, the net return is still much better. But the problem is you are unnecessarily keeping capital in your demat account, which is not even being used. So we said, let's transparently explain to the users what is the capital minimum required, and let's also give you clarity on max drawdown so that you are prepared. And we are also telling you this, we are showing you, we are transparently showing. No, that's why I'm clear. But what I am asking is, even if you are telling that, okay, so example, if you are doing a trade or Algo is doing a trade, right? Practically, I'm telling. So out of 10 trade, if you do, at least you should make 5 to 5 traders should be a lose or win, correct? Depends on your ratio of how much profit making trade is making versus how much loss making trade is making. Yes. I So understand. maybe what you will be saying me, like the profit making will be more than the loss making, even though the number of trades is more, right? That's what you're telling me, based on the profitable trades and losing trades. So in that case also, still what I cannot get it is how we are losing the 100% capital, like 3 lakhs if I'm putting, okay, and then per lot, how much you are telling? What is the maximum amount you're telling taking? The ITM4. The ITM4 is taking 3 lakhs. Entire capital it is deploying. You understand? Oh, okay. Entire capital is getting deployed. Okay. What I'm saying is, I could have easily, or we could have easily said, keep capital as 6 lakhs. We could have said that and say that we will deploy only 50% of your capital. You understand? That is something we could have easily explained. What we are telling you is, you don't necessarily have to keep a lot of capital parked in your demat account. You can keep 3 lakhs, provided you are also ready with additional capital if you want to execute this strategy. If at all this, for example, you had invested, let's say take your example only, you have kept a capital of 3 lakhs. The drawdown, max drawdown did not hit you like it happened here, for example. And it immediately went to 7.35 lakhs. You had started with 3 lakhs, it went to 7.35 lakhs. You were lucky, let's say. Okay. Do you really think you will need additional 2.5 lakhs? Okay. Got it. That's the point. If, for example, if you had started here, you would have definitely required 2.5 lakhs. Okay. And then this algo is already you have executed in any of your demat account, or it's newly released just now? We do. We have done forward testing of this algo as well. Unless we have, so any algo that we are releasing, even the last algos that we have done, we would not have released it without any forward testing. So both backward and forward testing of all these algos are done. Oh, it is done. Because see, what my experience, I'm not telling that your algo is also like that.
My experience is whatever we are showing in this payoff chart is not coming to actuals when you are executing it. Correct. For that, there are a few things you have to, if you're looking at any algo, this will be a last question, Chandru. I'll take other questions at the end. Yeah, because there are sure, many sure. people. You just go ahead. Sure, sure. Yeah, So thanks. the important, I'll request everyone to go on mute. सभी म्यूट पे जाइएगा कुछ देर के लिए. Important thing for any algo is how is the equity curve over a long period of time. Let's say 1 year's time. It's a decent time because in 1 year, last year, many things have happened. Is the equity curve for you is reliable for you? Is it something that you can accept or not? That is the first important thing. Second important thing, after every drawdown, is it, for example, is it, killing the lower low? That means this drawdown, is it able to quickly recover or not? It can go down for 2, 3, 4, 5 weeks. That's okay. But then if it is breaking the previous low, for example, some low here, if it is breaking and coming down and going back again, then that means drawdown is too volatile. So is that good for you or not? That is something that you have to see. And then this time we have also given you entry analyzer. We are also showing you where the entry would have taken and exit would have taken. Now this will clarify a lot of doubts because now you can see that every the profit making trades essentially are staying longer in the trade because the momentum is continuing. Whatever the strategy is doing behind the scenes, it is able to maintain long. The loss making trades, they are exiting shorter, exiting quicker. That is the reason why your loss is pretty small compared to the profit. Now look at this example itself, 7,000 plus and 650. Okay, so those are the things that I think is important for you to analyze. Is it able to recover periodically or not is the important question. I'll go with Ajay, I think. Ajay bhai, बोलिए. हेलो सर. हाँ भाई बोलो. हाँ जी, तो 1 लॉट से कर सकते हैं क्या इसमें? एक इसमें 1 लॉट के भी हमने आपको दिया है. ठीक है, 1 लॉट पे क्या होता है ना, ड्रॉडाउन ये थोड़ा ज्यादा हिट होता है. 1 लॉट का भी हमने आपको यहाँ पर दिया है. ओके. 1 लॉट के लिए भी इसीलिए हमने 1 लॉट के लिए दिया है. अब क्या है ना अजय भाई, हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आप मिनिमम आप खुद ही एग्जीक्यूट कर रहे हो. हमने एग्जीक्यूट नहीं, हम आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं बस, है ना. तो हम ये नहीं कह सकते कि आप 5 ही करो, 10 करो. आपका अकाउंट है, आप कितने भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है. हम बस इतना कह रहे हैं कि अगर आप 1 लॉट से कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंटली एक ही लॉट पे करो. ये नहीं कि 1 लॉट पे आप शुरू किए, एक दिन 2 लॉट पे किए, एक दिन 1 लॉट पे किए, ऐसे मत करो आप. ठीक है, आपकी कैपिटल के हिसाब से कंसिस्टेंटली 1 लॉट से करो. अगर आपका कैपिटल सही बनता है, अगर आप 2 लॉट से करना चाहते हो तो उसके बाद कंसिस्टेंटली 2 लॉट से ही करो. आप वो चेंज मत करो. वो बस हम वो कह रहे हैं क्योंकि हमने जो ये जो कर्व हमने दिया है ना, ये 1 लॉट पे कंसिस्टेंटली हम आपको दिखा रहे हैं. हम बीच बीच में अगर हम चेंज कर देंगे ना तो शायद कर्व चेंज हो जाएगा, तो आपको भी लगेगा कि यार ये मेरा कर्व अलग है, मेरा इक्विटी, मेरा रिटर्न्स सिमिलर नहीं है. ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली करो. समझ गए? और हाँ. लेकिन ये जो कौन से प्लेटफॉर्म में करना है, जीरोधा में मैन्युअली करना है क्या ये सब? कोई लिमिट नहीं है अभी, हम उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है. हम आपको बस नोटिफाई कर रहे हैं. आप जैसे ही आपको नोटिफाई आ जाएगा, आपकी जो भी डिमैट अकाउंट है उसमें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. हमारा कोई लिमिट ही नहीं है उसके अंदर. जिस दिन हम एंड टू एंड करेंगे ना, उस दिन हम आपको बताएंगे कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कर रहे हैं. फिलहाल तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप खुद ही एग्जीक्यूट कर सकते हो. जहां पर आपको करना है कर सकते हो. पाटिल सर. हाँ, 1 सेकंड ना अजय भाई, हो गया आपका? पाटिल सर. हाँ, हु इज दिस? शंकर. ಶಂಕರ್, मैं आपको देख नहीं पा रहा. हाँ ಶಂಕರ್, बोलिए प्लीज. ಸರ್, ಇದು ಡ್ರಾ ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ एक्सप्लेन ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. श्योर. 1-2 मिनट के लिए प्लीज सभी लोग, मैं कन्नड़ में बात कर रहा हूँ. थोड़ा प्लीज मेरे को 2-3 मिनट दे दीजिएगा. एवरीवन प्लीज होल्ड फॉर फ्यू मिनट्स. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಶಂಕರ ಸೇಂತಿಲ್ಲ. ಶಂಕರ್. ಓಕೆ, ಶಂಕರ್ ಅವ್ರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾನು 10 ಲಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 10 ಲಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಡ್ರಾಡೌನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 33% ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಾಟಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಇದೆ. ಅದೇನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ. ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 33%, 35% ಬರೋದು. ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 lakhs or 3 lakhs ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 6 lakhs ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಡೌನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಲಾಟಿಗೆ, ಬಟ್ ಡ್ರಾ ಡೌನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಅದು 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೋ ಟಚ್ ಆಯ್ತು. 7 ಲಕ್ಷ ಟಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪುನಃ ನೀವು 3 ಲಕ್ಷ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಡೌನ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2.5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೇ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು 2.5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಡೌನ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 ಲಕ್ಷನೇ ಇದ್ರೆ 5 ಲಾಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ 5 ಲಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು ಒಂದ್ 10 ಲಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಸರಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 5 ಲಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 10 ಲಾಟ್ ಹಾಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಇದು ಕರ್ವ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ 10 ಲಾಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕರ್ವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು, 5 ಲಾಟ್ ಇಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 ಲಾಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಮಂತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಾಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಮಂತ್ ಇಂದ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಪಿಕಿಂಗ್ ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್. रवि प्रसाद तो टाइम 8:42 हो गया, लेकिन मैं 10 बजे तक भी रुकने के लिए तैयार हूं, तो प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है सभी पूछ लीजिएगा. आई विल वेट. Patel, my only question is, am I audible? Hey Ravi, sorry, yes, go on please. See, my only question is like, I mean, see, what is the logic behind the entry and the target? I mean, sorry to ask this question, I know definitely, I mean, so did you only consider the volume, or I mean, the way you have educated us on your tool, like since from last 3-4 months? So in case if I ask you, if a new customer asks you, so what is the logic for entry and for the target? So is it only volume based, or you have altogether the thought process? Just Purely curious to on know. volume. Understood. It is purely based on volume. It doesn't consider price at all. We are not trailing with price. We are not looking at price. It doesn't even consider price into consideration. The only reason, one of the algo, the only reason it will consider Nifty spot price is to see whether it is too far from, let's say, important strikes like 25,000, etc., etc. But this is not the one. But then, like I said, it is not like any other algos where we are taking price into consideration. This is purely based on volume. Great. Okay. Yeah. Sorry, I didn't recognize you. I saw Ravi Prasad and thought, it is you. But Ankit Sharma. Hey, hi, thanks. So would you mind to go to one of the date, any of the date, and show me the trade? I have a few questions on this. So Yeah, this trade. Let's yeah. say. So let's say in this trade, you use the capital of 3 lakhs, right? And you made this call, right? Yes. Now you made around we use capital of 30,000 because this, when we are seeing here, right, this is one lot. अच्छा, okay, ठीक है. One lot में you made around 6,500 as your P&L by the end of the day. Gross margin, gross profit. So I'm assuming it does not include the STT and everything, other things, right? Brokerage and STTs, correct. Brokerage and STT. तो हमारा जो total P&L होगा वो roughly around 4,000, 5,000 के around होगा इस time, right? ना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि 2 ही ट्रेड है, तो ज्यादा नहीं होगा. बट इररेस्पेक्टिव आप कितने लॉट पे कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा. बट एनीवेज, right. So this is basically this total is the gross profit, not the actual P&L which we see after the taxes. क्योंकि एक्चुअल P&L के लिए आपको लॉट भी डिसाइड करना पड़ेगा, फिर वो यहाँ पे कैसे दिखा पाएंगे, इसीलिए हमने नेट P&L नहीं, पर लॉट तो हमने सिलेक्ट किया है ना खुद ही, इसमें वन लॉट यहाँ पर नहीं है ना. लॉट हमने यहाँ पर एक ही लॉट किया, आपको नेट P&L में लॉट वाइज दिखाया है हमने. लेकिन जब आप एंट्री एनालाइज करते हो, इस एंट्री एनालाइजर का इंटेंशन सिर्फ ये है कि आपको क्लियरली पता चले कि भाई ये एंट्री जब ले रहा है, मार्केट जब गिर रहा है तब भी वो लॉन्ग एंट्री पकड़ कर रखा है क्या, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब भी शॉर्ट एंट्री लेकर बैठा है क्या. ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम दिखा रहे हैं कि कहां पर एंट्री लिया था, कहां पर एग्जिट लिया था. ठीक है, यहां पर पूरा जो भी दिखा रहे हैं सिर्फ ग्रॉस एक लॉट के लिए दिखा रहा है. अब ये इस हर एक दिन के लिए हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे तो उसके लिए कुछ अलग बताना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग नेट P&L पे आप देख सकते हो. बेटर ये है कि आप नेट P&L पे देखो उसके लिए. समझ गए ना? ठीक है. इसमें आप SL भी दिखा सकते हो किसी तरीके से. हम लोग कोई
देयर इज नो नहीं, एसएल अगर- ऊपर दिखा है, लेकिन हम लोग आपको बताएंगे कि मैक्सिमम कितना आप एसएल रख सकते हो, वो हम आपको बताएंगे इसके अंदर। ओके, तो फिर तो ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो इट्स लाइक, मतलब हाउ विल वी मैनेज द रिस्क रिवॉर्ड इन दिस केस, लाइक इफ वी डोंट यूज ओके, बेसिकली क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये है, रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मनी पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो। आप रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि भाई जब एंट्री करेक्ट है तो हाउ इट इज परफॉर्मिंग, एंड व्हेन इट इज एंट्री इज नॉट करेक्ट हाउ इट इज परफॉर्मिंग। दो चीजें, रिस्क रिवॉर्ड आपको वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा है, प्राइस पे नहीं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे पूरे प्लेटफॉर्म में हमने कभी नहीं कहा है कि आपको आप रिस्क रिवॉर्ड प्राइस के बेसिस पे करो, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं, हम रिस्क रिवॉर्ड आपको कंट्रोल कर रहे हैं वॉल्यूम के बेसिस पे प्योरली। लेकिन हो सकता है कि कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया और हमारी तरफ से अलर्ट ही नहीं आया आपको, ओके। हम कोशिश करेंगे कि वैसे इवेंट्स ना आए, लेकिन आज हुआ था मार्केट में, हमारा प्लेटफॉर्म एक साल से कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज दिन में सुबह कुछ प्रॉब्लम हुआ था, हम लोगों ने देखा क्या प्रॉब्लम, हम लोग ऑब्वियसली चेक कर रहे हैं। हो सकता है उसके लिए हम आपको बताएंगे मैक्सिमम एसएल कितना आपको रखना है, वो आप उतना एसएल आप लेके आप चल सकते हो। ब्लैक स्वॉन इवेंट No. के लिए हम आपको बताएंगे कि एसएल क्या रखना है, अदरवाइज वॉल्यूम आपको कंट्रोल करके बता ही रहा है। हाँ, लेकिन दिस इज, डू यू सी दिस, इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ ह्यूज रिस्क, बिकॉज यहाँ पे मैंने 30,000 रुपए लगाए हैं। आई मीन अगर हम इसी चार्ट को देखें, और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे या तो मेरे 30,000 खाते चले जाएंगे अभी के लिए, सपोज मैंने एसएल नहीं लगाया, या फिर मैं कुछ बना के निकलूंगा, जो इस केस में मैंने 20% निकाला है मैंने, विच इज 6,000। तो ये बेसिकली ये अभी ऐसे है, ओके, ठीक है। थोड़ा रिस्क लग रहा है इसमें काफी मुझे, क्योंकि तो मैं आपको कह रहा हूं कि हाँ, अगर आपको उस तरह से देखना है तो आप अलग अलग दिन का डेटा देखो, किसी 2 दिन का पूरा डेटा देखो, और देखो कि रेगुलरली आप कंटिन्यूअसली जब करते हैं तो क्या आपका पूरा कैपिटल किसी दिन जा रहा है, मतलब -30 दिन किसी दिन पूरा जा रहा है क्या, वो आप चेक कर सकते हैं, है ना। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद एनालाइज कर, हमने पूरा जी, आपको जी। डेटा दिया है आपको ठीक से देखने के लिए कि भाई अलग अलग दिन पे कैसे काम कर रहा है, उसके बेसिस जी। पे आप देख सकते हैं। एंड अगले देयर दिन नो, नहीं, इसको चेक करने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन तो लेने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट टू चेक दिस पार्ट। आपको लॉग इन करना है बस, क्योंकि एंट्री बस एनालिसिस login बिना लॉग इन के काम नहीं करेगा। ओके, 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 अदरवाइज बाकी सब कुछ तो ओपन ही है, आपको लॉग इन भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, cool, थैंक यू। No problem. Again, I'm randomly taking Senthil. Yeah, yes, thank you, sir. No Sir, problem. actually, one doubt. We are having 6 to 7 strategies, okay? We 6 to had. Now 7 we only have strategies one. for option buying. We only have one right now, Senthil. We had 6-7 strategies, but we removed them Okay. all. We simplified it. You can see on the screen, we have only one now. Only just one. Okay. For Okay, buying, so and that's we have one easy. for selling. Okay, okay. We will Okay, have one okay, for okay. selling So, also. okay, for selling, for option buying, This is the one for option buying. What you see on the screen is for option buying. For option selling, we Okay. don't have it now. Tomorrow or day after, we will publish that as well. For option selling also, we will publish it. okay, from when it is published, sir? The data will be available to you tomorrow or day after maximum, I can tell you. It should have been available today itself, but it will be available to you tomorrow or day after. We are happy to do one more call on Friday or Monday again, just in case if anyone has Okay. questions before subscribing. We will start this most likely, I don't know, at the end of this week or next week, we will also start the subscription. I'll give you some more information. Please stay tuned. Yes. सबको मैं एक और information भी बता दूंगा. अभी कोई disconnect मत कीजिएगा. हाँ. Go on. Any other questions? Sir. Yes, sir. Actually, I'm traveling suddenly, but I am waiting for this. I can't understand. Actually, Mr. Dhanush Kumar, I'm following that person. He's Understood. explained everything. From on that day, I'm following everything. I will be ready to deploy that Algo. Okay, sir. So, Back test taken from past 1 year, sir. 1 year, Why we 13 are months. shorted for only one system now? All they are combined. Sorry, 13 months data we have in the back test. Correct, Senthil. Yes, sir. Totally 6-7 strategy we are having. No, Now only only one. why we are now we are why shorted only one. Okay, Okay, minimum fine. capital Good how question. much it required, sir? Yes. Senthil, I have explained all of that. I understand you're traveling. This call is recorded. Yeah. It will be available in Okay, our okay, YouTube okay. channel. That's it. Okay, thank you. Then it's Please. okay. Yeah. Listen to that. We will upload it in YouTube channel. You can listen to it again. Okay.
Okay. The reason why we have Okay. shortlisted, I'll answer your one question though. Why the reason why Yes, we yes, yes. went with only one strategy is because too many Yeah. strategies was only confusing people. We have got a lot of people questioning why there are so many strategies, which one do we pick and all. And moreover, Okay. all those strategies had 2000, 3000 trades. We have reduced it dramatically. We only have 750 trades for 13 months, which is significantly good. It is unbelievably good. Okay. Okay. That is the Okay. reason Okay, why sir. we get one. Because now I am running with Algo. Per day, it will take up to 16 to 32 trades. Sir. That's Oh my very God. bad Yeah. We for had option buying. something similar. Correct. We have removed that. We have Okay, reduced sir. it. Okay, sir. Okay. Okay. Thanks. So Partha, Okay, when sir. you say Thank you. 758 trades, right? So is it a buy Yes. and sell or 758 into 2? No, it's only 758 buy for both call and short put together. Only 758 trades for 13 months. Only for buy. This strategy is only for option buying. No. What I meant to say is like 758 trades. See, if I buy, if I want to exit, right, I have to go for selling also. So is it like Correct. 758 into what? pairs. 758 trades. Trades means two orders per trade. Na? Achha. So on an average, it will be like three orders. I mean, on an average for 13 months, you said, right? Yeah, it would be. Correct. 13 months. Correct. Got it. Which is actually pretty good. And what I'm saying is you'll see the entry analyzer. That will give you a lot of confidence. I'm eager to see. Maybe you're taking this example, but yeah, do we get any sort of Excel sheet where we can see right this many entries on an average, right? I mean, this would be tough in case if you want to go check each and every entry. But ऐसा मिले कोई Excel पे right इतने entries मिल गए एक दिन में maximum 5 or minimum 3 entries and with maximum profit इतना हो गया maximum loss इतना हुआ. So maybe that would ease out. Instead, what I suggest you is you tell us what is that you want to see here. For example, maximum per day how much and which day it was, minimum per day how much and which day it was, and average how many per day. If you want that, we will add it on the screen itself. Sure. Yeah. You don't need the Excel sheet. We will calculate it. Just send us the details. We will add it. Got it. Okay. Abhinav. Yeah. Hi, Abhinav. 1 second before you ask your question. One more. Yeah. What was that? Yeah. So one other thing, important thing is this strategy. We will add it to our Telegram channel 915Trade. We have a Telegram channel, okay, where we are simply announcing time and date. This strategy for at least a couple of days or at least for a few days, if possible for a week, I don't know. We will add it in the Telegram for free. Okay, so that you can see how this is happening and when it is giving you a trade, etc. etc. हम लोग इस स्ट्रैटेजी को टेलीग्राम में 915 ट्रेड के टेलीग्राम चैनल में फ्रीली हम डिप्लॉय करेंगे. कम से कम 2-3 दिन या 5 दिन 1 हफ्ते के लिए हम लोग करेंगे. जब हम करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे. आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा. लिंक आपको चार्ट में यहीं पर दिया जाएगा टेलीग्राम का. उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में हम लोग कम से कम कुछ दिन के लिए हम इसको फ्रीली हम आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे ताकि आपको पता चले कि ये कैसे काम कर रहा है. आप सब्सक्राइब करने से पहले आपको पता चले कि ये कैसे काम कर रहा है. हम आपको वो नोटिफिकेशन 915 ट्रेड वाले चैनल में ही भेज देंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा सब्सक्रिप्शन से पहले. ठीक है. एनीवेज अभिनव गो ऑन प्लीज. सॉरी. CK, my question was, I mean, I had 2 or 3 questions. Firstly, if you look at the strike entry ITM 4, let's assume you've kind of entered at ITM 4 and the momentum is in your favor, both CE or PE. By the time you actually exit that strike could be ITM 6 or 7, right? At that strike, there are chances that there is a bid-ask spread there. Correct. Okay, so have you taken that into account? Because then even a few points could then per trade profit. It could. I understand. A couple of points here and there could basically. I will answer that question. Is there any other question? Yeah. One more question was that in your assumptions that you've taken 20 rupees per trade as your as the brokerage. 20 rupees per trade as brokerage, and then on 40 rupees per trade. Correct. Because two sides. Okay. Correct. So you've taken 20 of basically 40 rupees per trade, and even and in case we are going for a discount broker or any other broker, our profit of course can increase, right? Of course. But we have also taken STT and other taxes also into consideration when we are doing this. Correct.
Okay. That remains same, right? No matter which broker you take, that No matter. FTT and everything will remain That same. will remain the same. Yes. Okay. These were the 2 or 3 questions that I had. I will answer this first question to you. So ITM4, like you said, it is possible that by the time by the time you exit, it will become ITM5 or ITM6. Let's say ITM6, 100 points rally you've got. ITM6 is what you're entering it. We have done the same thing for ITM5 and ITM6 also. 2 points I'll answer. For ITM5 and ITM6 also, even if we enter, assuming we are exiting at ITM5 and ITM6, the curve is still good and we are able to actually get better results for ITM5 and 6. But I know that liquidity is a problem for even entering. That is the reason why we have not kept ITM5 and ITM6. Second point, what we have also done is we have taken entries at, let's say, for example, I'll take the same example. We have taken entry at, for example, 1190. We assumed, because we are giving notifications, we assumed that there will be people who wouldn't be able to take an entry at 1118 close. They may take an entry at 1119 close and they may exit at one candle later. Right? We have taken that into consideration and we have seen if somebody takes 1 minute late, what happens? You would still get the same equity curve. There will not be much of a difference. So you have 1 minute delay. Even then you are still be able to get similar equity curve, not a lot of a difference. Now you have liquidity of an entire minute. You understand? We have not taken 1 minute. We have also taken 2 minutes. We went a little further to see if what happens if actually somebody misses out for 2 minutes, for example, because internet connection or whatever. Even then it is still stable. It is still giving a similar result. Now I hope that answers your question. That takes the fear out. Yeah. So a follow-up question is that the price cap that you've put in your assumptions, in case, initially you said that it will come as a notification, right? So that I can't do, right? If I do it manually, that price cap I can't do. No, so manually if you are doing, and if you see that the price is 325 or 330, don't take the trade. Okay. That's all we are saying. We're just saying don't take the trade. If it is 400, don't take the trade. Okay. So that is something that I'll have to kind of check. While taking an entry, you yourself can actually take a decision whether you want to take the trade or not, depending on the entry for that particular item. You already decided whether you will do ITM3, ITM2, ITM4. Now, and also the other point to answer to your first question also is Nifty has 200 points of movement. I'm not getting the technical indicator name per day. If you day wise, if you look at this thing, 200, 250 points easily it will move, which means that there should be liquidity at least till 6 to 7 points or 8 points easily up to 8 strikes. However, I'm taking benefit of doubt. We have done 2 more candles and we still have got a decent exit even for that also. Okay, understood. Once you kind of move to a complete automated platform, that check will be done in the algo itself, right? Correct. Yes, of course. Okay. All right. Okay. Thank you. So Patil, these are all weekly expiries? All of them are current week expiry only, not for the next week expiry. Okay. Patil sir. Patil sir. Who is this? Shankar. Shankar. Tell me. ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆಲ್ಗೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆಟೋಮೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ. ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಇದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅನಲೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗನೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಅನಲೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ನೆ ನಂಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬೇಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಗೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಆಗ್ಬಹುದು. ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋ ತನಕ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರೋ ತನಕ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಸಿಗೋದು. ನೀವು ಓನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Sir, I have one question, Mohan here. Mohan, I was just coming to you. Yes, Mohan. Yeah. So like, see, the thing is, I have subscribed to your platform already. So the thing is, like, when I make an entry using your signal, right? Like, if it's hitting my stop loss or if it's going in loss, right? The confidence to take next trade, right? I'm not getting that. So when we automate it, like, I can just
forget it, right? Once I automate it. So like as you are sending notification via Telegram, so is there a way I'm yet to explore Telegram whether I can automate that notification to trigger I doubt. something, to trigger a script? I know. I doubt. However, what we will do is we will also add some kind of a technologically we will enable you to add your own server URLs where we can push the same thing. If you are capable, you can execute it automatically. We will add that kind of a feature. In Telegram, you may not be able to do it, but if you are tech savvy, you should be able to do it. We will add that feature soon. Yeah, okay. Thank you. जग्गू भाई, जसदीप भाई बोलिए. Sir, good evening. Good evening भाई, बोलिए. My question is, sir, by when do we expect this to be live online? सबसे पहले तो एक एक सवाल पूछेगा. सबसे पहले तो ये पहले आपको 915 के टेलीग्राम चैनल में फ्रीली आएगा कुछ दिन के लिए. 2, 3, 4, 5 कितना दिन मुझे नहीं पता, उसमें आपको आ जाएगा. और शायद इस हफ्ते के अंत तक आपको सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा. लेकिन लाइव में आपको मतलब आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको वैसे ही आपको सिग्नल्स मिलते ही रहेंगे, या फिर अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा. And what is a general ballpark expected subscription cost? आई थिंक मुझे अगेन एग्जैक्टली अभी मैं कह नहीं सकता, जब तक पेज लाइव नहीं हो पाएगा मैं ऑब्वियसली कह नहीं सकता. लेकिन आई थिंक 4999 के रेंज में है, सम 5000 और 4999 के रेंज में है. ओके, पर मंथ. हाँ, पर मंथ, क्योंकि लॉट हमारे पास डिपेंड नहीं है ना. इससे पहले क्या हो रहा था, हम लोग कह रहे थे कि 5 लॉट के लिए हम लोग 3000 का कुछ कह रहे थे. अभी हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है कितने लॉट्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो इसीलिए हमने वो प्राइस शायद थोड़ा सा चेंज रहेगा उसके अंदर, बस और कुछ नहीं. अगेन आप वेट कीजिएगा जब तक प्राइसिंग लाइव नहीं हो जाता है तब तक. हाँ बोलिए. Now my next question is, say if I'm in ITM 2, I don't know what is my stop loss. Would you be giving us a ballpark stop loss figures for ITM 1, ITM 2 and ITM 3? हाँ, तो हम आपको सारों के लिए हम आपको मतलब ब्लैक स्वॉन इवेंट के लिए, मतलब इमरजेंसी के लिए कितना आप रख सकते हो वो हम आपको बताएंगे. ठीक है. लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है, अगर सिस्टम सही से चल रहा है, तो आप जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसी के हिसाब से आप करो, वही हम बता रहे हैं. ब्लैक स्वॉन इवेंट के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कितना आप ले सकते हो बोलकर. हाँ, but my question is, say if I take a trade at say 300 rupees. हाँ. And you have given me a stop loss at 150. So, do you say that I put a stop loss at 150 and then carry on with my trade, or I don't do that at all? अब वो आपके ऊपर है. आप अगर हमने कहा कि आपको मोस्ट लाइकली हम आपको बताएंगे कि हर एक एटीएम स्ट्राइक पे या तो परसेंटेज वाइज बताएंगे या फिर हम आपको बताएंगे फिक्स्ड अमाउंट कितना ले सकते हो मैक्सिमम बोलकर. अगर हम परसेंटेज वाइज बताएंगे तो आप जब एंट्री ले रहे हो तभी आप उतना परसेंट का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ सकते हो एंट्री के टाइम पे. राइट. तो अगर ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है तो वो कम से कम वो तो एग्जिट करके चला ही जाएगा. वो नहीं भी होता है तो आपको वैसे भी आप मैन्युअल एग्जिट कर लोगे, है ना. राइट. करेक्ट. That's it. That's all. थैंक यू. प्रतिभा जी बोलिए. जी गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जी, बोलिए. सर मैं ये बोली, ये जो ड्रॉ डाउन का है ये इसका समझ नहीं आ रहा सर, ये क्या है? जैसे कि मान लीजिए अगर हम 10 लॉट से करते हैं तो हमें 3 लाख कैपिटल चाहिए, तो प्लस 3 लाख हमें उसके बाद और रखना है. तो मैं आपको क्यों बताता हूँ प्रतिभा जी, एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए क्या होता है कि मानते हैं कि आपने 3 लाख से शुरू किया, ठीक है. जी सर. ठीक है, टाइम अच्छा था आपका, मानते हैं हम सबका टाइम अच्छा था उस टाइम पे, और हमको ड्रॉडाउन ज्यादा लॉस ज्यादा नहीं हुआ. 2 हफ्ते में वो अचानक से 7 लाख हो गया, 6 लाख जैसे कि यहाँ पर हुआ था. मानते हैं कि 2 हफ्ते में वो चल के 7 लाख के आसपास हो गया. तब उसके बाद अगर 2.5 लाख का ड्रॉडाउन आता है तो आपको एडिशनली कोई पैसे आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर हम मानते हैं कि हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं है, जो कि हम में से ज्यादातर लोग मानेंगे, ठीक है. अगर हमको ड्रॉडाउन हमने शुरू ही किया 18वें वीक पे और इमीडिएटली हमको ड्रॉडाउन आ गया, तो तब हमको कंपलसरी उतना हमको कैपिटल रखना ही पड़ेगा. अच्छा.
लेकिन उसके बाद जी सर। जैसे ही रिकवर करके वो 7 लाख के आसपास जाता है, तो हम तब कह सकते जी हैं कि जी। भाई ठीक है, अब हमें वो 3 लाख रखने की जरूरत नहीं है, वो 3 लाख हम निकाल सकते हैं। ओके ओके। समझ गए ना आप? ये बायर हाँ का सर, हाँ स्ट्रैटेजी है। समझ। सभी लोग इतना आप समझ लो कि ये बायर का स्ट्रैटेजी है। बायर के स्ट्रैटेजी में इतना वोलाटिलिटी नहीं हो ही नहीं सकता। कोई भी आप बाई कर लो, आप खुद ऑप्शन अगर ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको मतलब ड्रॉडाउन तो बनता ही बनता है बायर का। हम कह रहे हैं आपको कि आप एक बार अगर आपका कर्व इक्विटी अगर सुधर गया, उसके बाद आपको वो अमाउंट रखने की जरूरत नहीं है। हम बस इतना ही कह रहे हैं, जी ट्रांसपेरेंटली आपको बता रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर्ड रह सको। जी ठीक सर। है। जी, Done. और कुछ एक और क्वेश्चन है सर, ये इसका हाँ। सब्सक्रिप्शन मतलब इसका चार्ज क्या है सर? इसका अभी फिलहाल तो प्रतिभा जी नहीं है मेरे पास वो सवाल। मैंने कहा था जैसे कि 4999 के शायद उस रेंज में होगा, लेकिन वेबसाइट में वो पता चल जाएगा। डिस्कॉर्ड में, टेलीग्राम में, दोनों में हम आपको बता देंगे। अभी क्योंकि वो लाइव नहीं है तो मैं बताकर भी कोई फायदा नहीं। 2-3 दिन में वो ओके लाइव हो सर। जाएगा। प्राइस उसका लगभग आई थिंक 4999 के रेंज में रहेगा। सर जी अब सर। आप 100 लॉट से भी करेंगे तो भी वो सब्सक्रिप्शन चेंज नहीं होगा, कि हमें तो नहीं पता आप कितने लॉट से कर रहे हो ना, इसीलिए। जी सर। हाँ, यस। ओके सर। ಮೇಡಮ್ ओके, ಹಿಂದಿಲಿ थैंक यू ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ सर। ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಾ. ಡ್ರಾಡೌನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್. ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡನೇದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದು. ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲೈವ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ 4999 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಂತ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸರ್ ಈಗ ನಾವು 10 ಲಾಟ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸರಿ. ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು, ಹಾ, ಅವಾಗ ನಾನು 3 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ನೀವು 5 ಲಾಟ್ ಇಂದಾನೇ ಮಾಡಿ. ಆ ತರ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಡಬಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು 10 ಲಾಟ್ ಇಂದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು 5 ಲಾಟ್ ಇಂದಾನೇ ಮಾಡಿ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಿ 5 ಲಾಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಹಾ. 5 ಲಾಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 3 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು, 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾ. ಅದು 6 ಲಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ 10 ಲಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಸರ್. ಅದು ಮಂತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಂತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ತೋರಿಸೋ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕರ್ವ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕರ್ವ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸುದರ್ಶನ್, ಸಾರಿ, ಸುದರ್ಶನ್. ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ. Hello. ಹಾ ಸುದರ್ಶನ್, ಎಸ್ ಗೋ. Hello. ಯಾ ಯಾ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್? Hello. Hello. Hello, Sudarshan, I can hear you, I think. हेलो। राकेश शर्मा जी सर, बोलिए। हाँ हाँ पाटिल बोलिए। मैं प्रोसेस समझना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि 915 ट्रेड का आप टेलीग्राम में ऐड करेंगे, राइट? उसके बाद आप सिग्नल देंगे वहां से बाय का, या नोटिफिकेशंस बोलेंगे, सिग्नल नोटिफिकेशन? हाँ सर, हाँ। नोटिफिकेशन आएगा तो उसके हिसाब से हमें ITM 1, ITM 2, ITM 3, ITM 4 कोई भी एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? आपको कौन सा अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके उसी के साथ चलिए, चेंज मत कीजिएगा बीच बीच में। हाँ, गो ऑन। ठीक है, तो मतलब एक बार ITM 2 अगर हमने सिलेक्ट किया तो 1 मंथ ITM 2 के साथ ही ट्रेड करना है ना? हाँ हाँ। ओके, तो ITM 2 में सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद 1-2 मिनट, एक हो सकता है कि 1 मिनट लग जाए ट्रेड लेने में, तो ऊपर भी जा सकता है जैसे। करेक्ट, आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ ऑलरेडी आपको। मैंने इससे पहले ही बता दिया था, शायद इंग्लिश में ही बता दिया था, लेकिन हमने ये स्ट्रेटेजी को क्या किया है कि जो एंट्रीज हमने लिया है ना, ठीक है, इसी को सोच के हमने क्या किया, जो एंट्रीज हमने लिए हैं वो एंट्रीज हमने 1 मिनट फॉरवर्ड किया है, ये करके कि भाई किसी ने गलती से मान लो उस मिनट पे नहीं लिया, 1 मिनट बाद लिया है, तो क्या होगा? ओके, उसके बावजूद भी आपका इक्विटी कर्व सिमिलर ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। हमने कहा 2 मिनट लेते हैं, 2 मिनट भी अगर आप लेते हो तो भी लगभग आपका इक्विटी कर्व सिमिलर ही है। इनफैक्ट कभी कभी 2 मिनट अगर आप लेट हो गए तो शायद एग्जिट हिट हो जाएगा, शायद आप वो ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। तो हो सकता है कि कभी ऊपर कभी नीचे हो जाएगा, लेकिन सिमिलर इक्विटी कर्व आ जाएगा। वो हमने टेस्ट करके उसको ऑलरेडी रखा है, क्योंकि हमें पता था कि जब नोटिफिकेशन दे रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग 1 मिनट तक वेट, 1 या 2 मिनट डिले हो सकते हैं, इसीलिए वो हमने ऑलरेडी टेस्ट करके रख लिया है।
हाँ जी, दूसरा सवाल। ओके, हाँ, और सर। दूसरा सवाल ये है मेरा, जैसे कि अभी आपने कहा 10 लॉट से अगर हम लेते हैं तो मैक्सिमम अगर सही टाइम रहा तो 3 लाख से 6 लाख अगर चला जाता है तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, जरूरत राइट? नहीं, लेकिन हाँ, हाँ अगर नहीं गया तो फिर आप 6 लाख रखो। तो अगर 3 रखो। लाख से, हाँ, 3 लाख से 6 लाख चला जाता है तो क्या 3 लाख को विड्रॉ कर लेंगे? ऑफ कोर्स आपका कैपिटल तो बेस कैपिटल 9 लाख बन जाएगा, फिर आप वो 3 निकाल लो क्योंकि आपका लगभग क्वेश्चन है उतना, तो आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो आप, करेक्ट। तो बेस, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अगर, अच्छा ठीक आपके है, पास मतलब 6 लाख कैपिटल आपने डीमैट हाँ, अकाउंट में रखा सेफ साइड पे, वो हो ओके गया ओके, 9 लाख, तो आप 3 राइट लाख राइट, निकाल सकते हो, करेक्ट। ओके, ठीक है। ಸರ್ हाँ ಹೇಳಿ ಸರ್ एक ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆಲ್ಗೋ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ 3:30 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತಾ? ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಆಲ್ಗೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 13 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಂಟ್ರಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಂಬೇಡಿ. ನಾವು प्लेटफॉर्म अल्लू इधे ಹೇಳಿದ್ವಿ, आप कोई भी, मैं कह रहा हूं इस पे भरोसा मत कीजिए प्लीज, आप सारे एंट्री एनालाइज कर लीजिए, आपके पास टाइम है, ये अभी ऐसा नहीं कि कल ही शुरू हो रहा है, जल्दबाजी नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, तो प्लीज आप बैठ के इसको एनालाइज करो, एंट्री सब सभी स्क्रूटिनी करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो पाटिल सर, मैं सिर्फ ये जानना था, जैसे मैं सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, ओपन करने के बाद मैं इस चीज को कैसे एनालाइज करूँ या कैसे वेरीफाई वैलिडेट करूँ चीजों को? आपको क्या? लॉगिन करना पड़ेगा, हाँ, अगर आप एंट्री एनालाइज कर रहे हो तो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में आपको बस डेट सेलेक्ट करना है, कौन से दिन पे हाँ, कितना प्रॉफिट होता है लॉस होता है यहीं पे पता चल रहा है आपको। हर एक ओके, महीना डेट कोई एक महीना हाँ, लेके उस एक महीने का पूरा एनालाइज करो, देखो कितने ट्रेड आ गए इस महीने में इस पर्टिकुलर डे पे। या उसके 5 बावजूद भी ट्रेड, आपको हाँ, करेक्ट, उसके बावजूद 6 भी ट्रेड, आपको 6 हाँ ट्रेड से हाँ, 5 लॉन्ग है 1 शॉर्ट है, उसके बावजूद भी आपका ये पीएनएल है वट एवर, एंड हर ओके एक ट्रेड का आपको पीएनएल दिखा रहा है वहीं पर, आपको मतलब राइट, कन्वीनियंस है, आप पूरा जान सकते हाँ, हैं कि हर एक ट्रेड में कितना आपको प्रॉफिट है लॉस था जो भी है। Patel, what do you mean by one shot? आई डिडंट what गेट इट। means There put is one लेना, वन शॉट one shot. Acha, you शॉर्ट said शॉर्ट put buy. एंट्री, पुट Put buy. बाय, short, Oh, put okay. buy, लॉन्ग है। Okay, I was referring this to long be को option call, buying again. Got it. हाँ, And do we have the flexibility of backtesting it for like हाँ, 3 years? Do we have that flexibility, only Patel? one, Not right now, but at some point we will think about it. We will try to get it. I'm sure it will have similar response, Ravi, because और 1 year it is actually a good period. Go on. Sorry. या सो पाटिल सर, इसका एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी अगर बात करें, मतलब किस तरह से एक्यूरेसी बोल रहे हो? यहाँ पे है ना आपको हाँ, मतलब 760 पे लगभग हाँ, 760 के आस में 300 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं और 450 लॉस मेकिंग ट्रेड है, और ये एक एक्यूरेसी हो गया। दूसरा, हाँ, क्या आपको सिग्नल इसी कैंडल के अंत में आएगा? 17 का कैंडल 12-18 पे आएगा, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, टेलीग्राम ने हम आपको दिखाया भी है, वो आपको ठीक, 12-18 पे आएगा ही आएगा, वो एक और एक्यूरेसी हो गया। दूसरा, ये जिस बेसिस पे काम कर रहा है क्या वो ठीक से काम करेगा कि नहीं, वो उसके लिए आप नेट पीएनएल का इक्विटी का देख लो आप, है ना। ओके तो ये ओके, सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि आप आल्गो किस तरह से काम कर रहा है वो हमने आपको यहाँ पर ये करके हमारे प्लेटफॉर्म का, आप इतना तो पता है आपको कि हमारे प्लेटफॉर्म में जो चीजें हम करते हैं है अपना हमारा खुद का रेपुटेशन की, जो भी हम करते हैं वो एक्यूरेटली करते हैं, मतलब संभल के सोच समझ के करते हैं हम लोग, और जो चीज काम कर रहा है वो वैसे ही काम करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, उतना हम लोग उसका ख्याल रखेंगे। हेलो सर, सुन रहे हैं क्या? हाँ 1 मिनट। हाँ नाम क्या है आपका? अरुण। अरविंद। हाँ 1 मिनट। सो आपका सवाल हो गया ना आई थिंक? हाँ सर, हाँ सर, हो गया हो गया। हाँ तो ठीक है अरुण। एक लास्ट सवाल है कि एक कब से यूज कर सकते हैं? 2-3 दिन बाद या इसी वीक में या नेक्स्ट वीक से एल्गो? मैं मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में हो जाएगा डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, सुन रहे हैं क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा ये सवाल था कि मैंने इसको ज्वाइन करा, तो मेरा नेट स्लो होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। हाँ तो बट मैं अभी आ चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें ये मेरे को निफ्टी दिखाई दे रहा है, ये निफ्टी से रिलेटेड है ना सर? ये पूरा निफ्टी का ही मैं आल्गो है। क्लास नहीं देख पाया। निफ्टी ये आपका अच्छा, ओके। इसका एक और बात, सब्सक्रिप्शन हमें अलग से लेना पड़ेगा क्या? हाँ जी अलग से सब्सक्रिप्शन रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप लेट से ज्वाइन किए हैं
ये पूरा कॉन्वर्जेशन रिकॉर्डेड है और ये हमारे YouTube 915 ट्रेड के YouTube चैनल पे आएगा, आप दोबारा इसको सुन लीजिएगा, ठीक है? हाँ बोलिए। तो सर इसका चार्जेस अलग देना पड़ेगा क्या? हाँ ये जी, हमें सीखना है, आल्गो का क्या अलग करना है रहेगा, सर इसको? आल्गो का ठीक अलग है। रहेगा चार्जेस। आपको नोटिफिकेशन आएगा टेलीग्राम के अंदर, ये ऑटोमेटिकली भेजेगा और उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन फीस रहेगा, सब्सक्रिप्शन के मॉडल पे ये ही सर है। इसका ये टोटल नेट पैनल तो ये ठीक ठाक दिख रहा है सर, हाँ, बाकी मैं आपको एक और बात कहता हूँ, आप जल्दबाजी मत करो, हम एक दो और कॉल करेंगे, जितने भी आपके सवाल है आप दोबारा से पूछ सकते हो। आप पहले वीडियो पूरा यूट्यूब में आप सुन लो, आराम से सुनो, और उसके बाद डेटा को परखो, आप खुद ही डेटा देखो, ठीक है? जल्दबाजी मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले हफ्ते जैसे हम लॉन्च कर देंगे आप सब्सक्राइब करो, रुको 2-4 दिन, तो हम लोग टेलीग्राम में आपको सिग्नल भी दे रहे हैं, वो भी देखो, डेटा देखो। उसके बाद अगर आप सवाल है तो और एक और कॉल होगा, उसके अंदर भी आप ज्वाइन करो, एक तभी भी सवाल सवाल। और है सर, ये डेटा में ये सब कुछ दिखाई देगा ये हर मंथ का? यहाँ पे ना मंथ वाइज। अच्छा, डेट सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं? हाँ, किसी भी दिन का आप सेलेक्ट कर लो, एंट्री एनालाइजर है ना, एंट्री एनालाइजर में जाके किसी भी दिन का आप देख लो, किसी भी महीने का भी आप देख लो। ठीक है, ये तो फिर सर इसमें कुछ एनालिसिस थोड़ी ना करना है, फिर आपका नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही हमें इसमें को करना आपको है। देखना है कि क्या ये आपके हिसाब से क्या ये सही है कि नहीं है, ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा ना। आप क्यों सब्सक्राइब करोगे बताओ? अगर आपको पसंद ही नहीं आएगा तो क्यों सब्सक्राइब करोगे? पसंद कैसे आएगा? नहीं जी, जब तक आप खुद हाँ नहीं वो तो बनोगे। हाँ, हम्म। तो उसके लिए फिर आपको उसके डेटा बाद देखना में पड़ेगा। जैसे ये तो बोल रहा हूँ सर, जैसे कि हमें ठीक है आपका टेलीग्राम ये हमने ज्वाइन कर लिया, फिर नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, उसके बाद हमारा तो कोई एनालिसिस का ऑर्डर रहा ही डन नहीं कर, ना। कुछ एनालाइज आपको नहीं करना है, आप सही कह रहे हो। बेसिकली ये क्या है कि हम्म, मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमने मान लो सुपर ट्रेंड के आधार पे हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है? तो ये सुपर ट्रेंड के आधार पे काम करेगा ही करेगा, जैसे सुपर ट्रेंड काम करेगा ये जी, काम करेगा, और वो सिस्टम काम करेगा सुपर ट्रेंड के आधार पे, आपको नोटिफिकेशन देगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सुपर ट्रेंड पे काम करता है, हम लोग प्राइस बेस्ड या इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं, बस उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से काम कर रहा है और उसके बेसिस पे इस तरह से नेट P&L है, इसने एंट्रीज कुछ इस तरह से लिए हैं। अब देखो कि ये भाई जो बंदा जो स्ट्रैटेजी इसके पीछे बैठ के काम कर रहा है वो किस तरह से काम कर रहा है। सभी लोग म्यूट कीजिएगा जी प्लीज, सर, बाकी लोग। ये सब स्ट्रेटजी तो आपके डेली हेल्प ट्रेडिंग वाले पे सब कुछ बताया गया है ना? आप एक्चुअली इससे बेहतर स्ट्रैटेजीज है, आपको डेली जो भी डेली स्ट्रैटेजी माही भाई जो भी आपको बताएं, इससे बेहतर स्ट्रैटेजीज है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, आप सबको मैं अभी भी कह रहा हूं, और काफी हम्बल, काफी नम्र तरीके से कह रहा हूं, ये जो आल्गो है जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, ये अभी भी एक इंसान के ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मतलब खराब आल्गो है। हमारे प्लेटफॉर्म यूज करके इससे काफी बेहतर रिजल्ट लाया जा सकता है अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो, मैन्युअली अगर आप कर रहे हो तो। मुझे नहीं लगता है कि अभी भी ये आल्गो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो लेवल तक हम नहीं पहुंचे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि ये आल्गो और बेहतर हो सकता है। तो प्लेटफॉर्म पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपको प्लेटफॉर्म पसंद आ गया और प्लेटफॉर्म के बेसिस पे अगर आप कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि यहीं पे उदाहरण देता हूं, ये शॉर्ट वाला स्ट्रैटेजी यहाँ पे एग्जिट होने की जरूरत ही नहीं थी, तो कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन हुआ एग्जिट ना, ये सारी चीजें। अच्छा, मैं मूव ऑन कर रहा हूं। रामकेश। हेलो सर। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ हाँ सर, मैं जैसे ना पहले ये जो मैं माइसर का स्टूडेंट हूँ, ये जुलाई बैच में आप उधर आए थे। हाँ हाँ, तो वहाँ पे जो आपने वो उसका कुछ इंटरफेस अलग था, उससे अलग। अच्छा, ये एल्गो के उस पे है सर, ये कुछ ऐसा? ये पूरा ये वाला अल्गो है है, जो? आपने जब देखा था तो हमने यहाँ पर जी आपको डैशबोर्ड दिखाया था, ये वाले चार्ट्स जी दिखाए थे, जी है ना? जी जी जी, इसका इंटरफेस ऐसा था जी। करेक्ट। अभी हम लोग आल्गोस बनाए हैं, ये पूरा कॉन्वर्जेशन आल्गो के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने मिस किया होगा, अगेन मैं आपको कहूंगा ये वीडियो रिकॉर्डेड है, उसका लिंक हम टेलीग्राम में फिर से भेजेंगे, आप यूट्यूब जी पे जी ये दोबारा पूरा सुन लीजिएगा कि आल्गो कैसे काम करता है, समझ जी जी लीजिएगा, जल्दबाजी में सब्सक्राइब मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या है, कैसे काम करता है, क्या आपके जी हिसाब जी से ये सही है या नहीं है। और आपको जी अगर सर जी सवाल है, आप दोबारा एक और कॉल होगा उसमें भी ज्वाइन करके आप दोबारा सवाल करके उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी। और जो सर ये पैनल है, ये मतलब ईयरली है जो इसका एक कर्व बना हुआ है ये जो 13 लास्ट महीने में का, है? 13 महीने दिख 13 रहा है ना महीने आपको नीचे? जी हाँ जी। जी ये जी जहाँ पे शुरू हुआ था दिसंबर में सिर्फ 2 ही दिन थे, अब वो 2 निकाल ही जी सकते हैं बेसिकली, जी जी लेकिन जी बिल्कुल। 2025 जनवरी से लेके फरवरी का 1 दिन था, मतलब
जी आज का डेटा नहीं है, कल का एक्सपायरी, सॉरी बजट दिन का एक डेटा था, लगभग जनवरी मान सकते हो, तो 13 महीने, जी जनवरी से जनवरी 13 महीने का डेटा है। जी 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 पाटिल, आई हैव वन क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोला ना प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 309 और लॉस मेकिंग ट्रेड्स 448, हाँ, लेकिन ये वाला क्या था, मतलब वीकली ट्रेड्स पे, राइट? 40 shows in green and 20 shows in right? weeks, that means loss making trades are there. 40 weeks your total P&L was in green, 20 weeks your P&L was in loss. But don't you think that's a contradictory, because 40% of the winning trade and 448 trade are almost like 60%. Not like It is a that. So losing. you have to also consider whether they are coming back to back or whether they are coming, whether you had a recovery immediately after that. Based on that, the week will define. No, you had 448, but you don't know whether those 48 came one after the other. In which week they came one after the other. Those were all loss-making weeks. Some weeks they had recovery, so they all became profit-making weeks. Like that. Okay. मैं आप सबको ये भी कहना चाहूंगा कि हमने काफी इसके ऊपर हमने टेस्टिंग किया है, काफी हमने मैन्युअली भी एक्सप्लोर किया है, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे भी गलतियां हो सकती है। हमने बहुत परखा है, दिसंबर से हम लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन हमसे भी गलती हो सकते हैं। It is possible that we might have made mistakes. So if you think there is something wrong, and we have given you almost all the data for you to verify, please tell us. We will be more than happy to accept it, and we will want to identify or discover something like that even before we do anything, because the last thing we want is have something wrong in the platform and we roll it out to people. But although I can also assure you, मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि हमने बहुत बहुत परख के, बहुत टेस्ट करके, हर एक चीज को देख के मैन्युअली परख करने के बाद ही इसको पब्लिश किया। वो मैं आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस दे सकता हूं, लेकिन आप खुद भी परखें। अगर आपको कुछ लगता है कि गलत है, बता दीजिएगा, हम लोग बहुत जल्दी उसको रिएक्ट हेलो करेंगे और सर। देखेंगे क्या है। हाँ जी, बोलिए सर ये आपकी स्ट्रेटजी दीजिए नहीं सर आप। हाँ बोलिए, आप अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं सर? समझ में नहीं आया। आप अपनी स्ट्रेटजी को, हाँ स्ट्रेटजी ये बोल रहा हूँ जी, ये जो तुम्हारा नेट पैनल आ रहा है, ठीक है, हर मंथ का दिखा रहा है प्रॉफिटेबल, हाँ ठीक है, तो ये सर आप स्ट्रेटजी नहीं देते हो क्या? ये आप ये ये strategy- बोल रहे हो कोई टेलीग्राम strategy के नहीं। द्वारा नोटिफिकेशन। मैं आपका सवाल नहीं समझ पा जी रहा हूँ सर। ये एक स्ट्रैटेजी है, उसी के बेसिस पे ये सर काम करता है। हाँ अच्छा, तो सर ये अभी आपने बोला था इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसमें स्ट्रेटजी सीखना है या फिर नहीं, आपको ये सीखना ट्रेड नहीं से है। रिलेटेड है? मैं आपको सिंपल सरल जी तरीके सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। मान के चलिएगा कि ये एक इंसान है जी जो बैठ के पूरे 13 महीने ट्रेड ले चुका है, उसका एक दिमाग है, उसके बेसिस पे वो बंदे ने ट्रेड ले रहा है। हम आपको कह रहे हैं कि वो भाई साहब इस जी तरह से ट्रेड ले रहे हैं, तो वो अभी जब जी अगली लाइव में जब ट्रेड लेंगे, वो आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे कि हाँ ये ऐसा ट्रेड जा रहा है, यहाँ पर लॉन्ग जा रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट जा रहे हैं। आपको बस नोटिफिकेशन देखना है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। लॉन्ग बोलते ही आप कॉल बाई करोगे, शॉर्ट बोलते ही आप पुट बाई करोगे। आपको ज्यादा वहां पर लाइव में आपको एनालाइज करना नहीं है, लेकिन लाइव जाने से पहले, सब्सक्राइब करने से पहले, अपना कैपिटल रिस्क करने से पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि ये भाई साहब काम कैसे कर रहे हैं। उसीलिए हम आपको पूरा डेटा दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, वो समझने के लिए आपको जी यहाँ पर पूरा डेटा जितने तरीके से हम दिखा सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। Any specific time zone, Patil? ठीक है। Entry would be not taking first. You said it first Morning- 15 minutes and last morning 15 minutes. will be 15 to 20 minutes, it doesn't take any entry. After 3:10, I think it doesn't take any entry. Yeah. 320. 3:10, it doesn't take any entry. Sir, Exit it will definitely at 3:27. Sir, Hello, Shankar. sir. Sir, Patil sir, this is Sendil Kumar. One doubt, sir. Actually, we are taken past the weekly statement. You are given some graph. हाँ Continuously, it is shown a uptrend. Okay, sir. हाँ, not Past necessary. last. Yeah. Okay. What I'm asking, in which market our algo is working better? Please show that also. Sideways or uptrend हाँ, market or downtrend market. In you case will we are visible means I am notified in that also. Which see that in market entry it's working analyzer. better? हाँ, Yes, Senthil sir. ji, you will see Which it in the market? entry analyzer. Hold on 1 second. Okay, sir. You Okay. will be able to see that in the entry analyzer. I want you to analyze. Okay. Okay, for example, Okay. 30th January was Okay. a Okay. sideways Okay. trend. Okay. Okay.
Yes, yes, Sideways yes. market, we made 10,000 rupees loss on 30th January. Oh, okay. But same sideways market, another day is any profitable Yeah, it days is there? slightly different. I don't know. We'll have to just check Because each day. somebody can judge today is sideways day or trending day at morning itself. We can judge it. So I will we tell you can't even better. take it. I will tell you Yes, even sir. better. My suggestion is, please Yes, sir. take, Yes, sir. let's say October, November, December, January, 4 months. Analyze trades of every single day, all the 4 months. You will know better. We have given you all the data. 13 months data we have given you, right? My suggestion is you please Yes, analyze sir. at Yes, least sir. 3, Yes, 4 sir. Yes, months. sir. That will give you a much better idea. Okay. Oh, more. Still, we Hello, want sir. to be more back test. Sir, already you are given back test. No, why we are waiting for? When we are Because waiting for your launch. no, not Already like we are that. seeing, sir. Okay, Senthilji, it is okay, important for you to know the strategy that you are picking. okay. Does it suit you or not? How did it perform, for example, on 30th? How did it perform on 27th? Okay. Okay. How did it perform on Okay. 20th? You know what you have done on Okay. that day. No? You might have taken entries on 23rd. So Okay. what did the strategy do on 23rd? I'm saying please analyze that. Don't blindly trust. We keep saying this with our platform. Please do not trust because I'm showing you a very good net P&L. Okay. Introspect, doubt. You must doubt. Just because I'm showing you a good P&L, you can't trust. You must doubt. You must first go with a doubt. You must analyze entries. You must check whether how it is working at least for a couple of months minimum. Please do that. Okay, sir. Okay. And then you decide to Hello. subscribe or not subscribe. हेलो सर हेलो हेलो इस सर इस आपके इस एल्गो सब्सक्रिप्शन में ये जो ट्रेड्स होंगे इसका लॉजिक भी मिलेगा क्या? इसका लॉजिक नहीं मिलेगा क्योंकि इसका लॉजिक हम देंगे तो भी मुझे नहीं लगता है कि कंसिस्टेंटली आप कर पाएंगे, जेन्युइनली स्पीकिंग। क्योंकि मैं आपको हमने आपको एक लॉजिक फॉर एग्जांपल दिया था ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाला। अब उसको हमने आल्गो में तो कन्वर्ट नहीं किया है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली कोई कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए हमने अक्टूबर का बैक टेस्ट के बाद में रोक ही दिया। हमने कहा कि अगर हम बता भी देंगे तो भी कंसिस्टेंटली कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमने वो रोक दिया है। तो मैंने आपको 3-4 स्ट्रैटेजीज वैसे ही बता दिए थे, अलग अलग वीडियोस में भी बताया था। वो अगर आप कंसिस्टेंट करते तो शायद आपको वो उसमें भी ऐसा ही इक्विटी कर्व शायद मिल जाता, लेकिन अगेन नहीं कर पाएंगे कंसिस्टेंटली। जो काम मशीन कर सकता है वो इंसान कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएगा ना। एंड तो सर वो ये बात हो गई सर, हमें तो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है? सारे आल्गो स्ट्रैटेजीज का वैसे ही रहता है। अगर आप खुद आल्गो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो बात अलग है। सारे आल्गो स्ट्रैटेजीज का वही याद है। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप भरोसा, आप क्यों भरोसा करेंगे हमारे ऊपर, वो सवाल आपको पूछना। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन से दिन कैसे काम कर रहा है, वो तो समझ में आ जाए। वो सवाल आप जरूर पूछ सकते हैं। करेक्ट जी नहीं, ये चीज तो ठीक है सर, हमें दिख रहा है ये चीज तो आपका प्लेटफॉर्म कामयाब है, ठीक है, पर उसका लॉजिक भी सर, ये चीज तो ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है, बट इसका लॉजिक के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो इसका लॉजिक आप बोल रहे हैं ये नहीं समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है, ये बोल रहे हैं ना? बताऊंगा तो भी आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। मैं जेन्युइनली बताता हूँ आपको लाइव में, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि आप डायरेक्शन लेके अगर आप करो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ स्ट्राइक सेलर पे इसका डायरेक्शन लेके डिपेंडिंग ऑन, अगर तीनों के तीनों ब्लू हो जाते हैं तो आप लॉन्ग एंट्री ले लो, तीनों के तीनों शॉर्ट होते हैं तो आप शॉर्ट एंट्री ले लो। अगर मैं आपको बताता हूँ क्या, तो उसके उस बताने के बावजूद भी क्या आप हर रोज बिना मिस किए आप ये एग्जीक्यूट कर पाओगे? नहीं सर, वो एक अलग चीज है, पर आपको बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो बेसिकली ये ओके, अगर आपको स्ट्रैटेजी पता करना है तो हम कहेंगे कि आप मैन्युअली आप ट्रेड करो। मोर ओवर ये कैसे काम करता है ये बताने के लिए हमने आपको बेसिकली आपको एंट्री एनालाइजर दिया है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग वोलेटिलिटी पे ये कैसे काम कर रहा है, वो आप समझ सकते हो। बिहाइंड द सीन्स आल्गो एग्जैक्टली क्या फॉलो कर रहा है वो हम आई डोंट नो अगर हम लोग बता भी पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। इवन फ्रॉम सेबीज पॉइंट ऑफ व्यू दो अलग अलग आल्गोस रह सकते हैं, ब्लैक बॉक्स आल्गोस है, व्हाइट बॉक्स आल्गोस है। हम बेसिकली ब्लैक बॉक्स आल्गोस के साइड पे जा रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने सर आपका वीडियो देख रखा है, ये इसका बायर सेलर वाला ये सब वीडियो देख रखा है मैंने, ये कैसे काम करता है, बट इसका तो अलग ही बता रहे हैं नहीं सर आप एल्गो में, फिर ये तो फिर आपके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा।
हमारे ऊपर आपको डिपेंड नहीं है, बेसिकली आप आल्गो को या तो ट्रस्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो बेसिकली। अगर मैं आपको प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन देने की कह रहा हूँ तभी आप हमारे ऊपर डिपेंड रह रहे हैं ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो हमारा ही है। आपको जो मार्कर हम लोग दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे वो तो कहीं और नहीं मिलता है, उसके लिए भी आप हम पे डिपेंड रह रहे हो, है कि नहीं? नहीं वो बात सही है, ठीक है। मैं अगर मानता हूँ मैंने इसको एल्गो को सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है, मेरे को इससे फायदा भी हो रहा है, ठीक है। हाँ। फिर एल्गो को, ठीक है, अगर मैंने सब्सक्रिप्शन इसका लिया है, मेरे को इसको अगर फायदा है, ठीक है, मुझे दिख रहा है ये चीज ठीक है, वर्क कर रही है, तो फिर हो सकता है सर मुझे ये आगे आने वाले फ्यूचर के लिए नहीं मिले मुझे। अब उसका जवाब स्पेशली अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, जेन्युइनली मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर आगे आने वाले टाइम पे प्लेटफॉर्म ना रहा तो, अगर हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए तो जी वही तो कोई नहीं कर सकता इसी यार, चीज को मतलब तो उसका मैं क्या बताऊं आपको, उसका जवाब ही क्या दूं मैं आपको। एंड बाय द वे सर मैं समझ आपको गया मैं। थोड़ी देर रोकने के लिए कहूंगा सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया तो मैं उसके Patel, I want to add something, right? Patel, देखो ये ना make or break हो सकता है. Please give me 2 minutes, right? देखो, basically two things, right? One is back testing है, right? Which you have already shown to us. Back testing तो अब दिखा दिए, right? Now every individual has to go, जाओ एक बार check कर लो. See what I am interested is, see मैंने बहुत सारे एल्गो टेस्टर्स को देखा कि वो बोलते कि मेरा एल्गो चलता है, लेकिन दे नेवर मेंटेन ए सिंगल अकाउंट। कभी बोलते कि मेरा क्लाइंट ने ये प्रॉफिट किया, कभी मेरा क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, क्लाइंट जेड, राइट? आई might have met so many algo traders, वो लोग ना कोई रोल मॉडल अकाउंट नहीं रखते। so Patel, I would say this would be a challenge for 915 companies. So I'll tell you, right, make or break. So just in case, if you are launching this service from tomorrow, you said, right, you will be like giving it for 5 or 10 days free, right? तो I mean we have a platform, तो मैं देखो बैक टेस्टिंग तो मैं छोड़ दिया उसको, बिकॉज बैक टेस्टिंग अभी भी मुझे डाउट आ रहा है कि शायद आप लोग थोड़ा बायस्ड होके वहां पे बाई सिग्नल दिए, सेल सिग्नल दिए। बट स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो वंस यू लॉन्च योर एप्लीकेशन, तो मेरा पास तो डेटा रहेगा टेलीग्राम पे, राइट? यू कैन नॉट चेंज द डेटा, राइट? आई कैन ऑलवेज गो बैक, मान के चलो टुडे इज 1 Jan, एक महीने तक मैं ऐसे फॉलो कर रहा हूँ, 2 महीने फॉलो कर रहा हूँ, 3 महीने फॉलो कर रहा हूँ, राइट? इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर मी टू टेक द ट्रेड्स। तो 3 महीने के बाद आई विल गो टू योर टेलीग्राम, मैं जाके 1 Jan का ले लेता हूँ, एक एक ट्रेड जाके मैं चेक करता हूँ। बॉस यू आर गिविंग, देखो अगर चल गया ना, देखो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग योर टूल टू गिव समथिंग मिराकल इन 5-10 days, राइट? एज यू सेड, कभी कभी अपना किस्मत ही खराब है तो 2 महीने ड्रॉडाउन होता है, उसके बाद मोमेंटम आता है, राइट? ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम। सो आई मीन स्टार्ट दिस एक्टिविटी पटेल, राइट? आई मीन डाटा स्पीक्स। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ बात मत करो, राइट? डू दिस एक्टिविटी फॉर कंटिन्यूसली फॉर 3 months, and I think this would be a make or break honest, because I have not seen any platform which is giving this kind of data, and you guys are taking greater risk, right? हो सकता है कि, right, I mean maybe after 3 months the continuous drawdown, people might not show more interest towards your tool, but again follow it for another 3 months. So you know, right? I mean if the trader is smart, if a trader is smart, right, they will see the ट्रेनिंग फॉर ए ईयर ऑफ जर्नी। देखो ऐसा नहीं होता कि हम लोग बिजनेस कैसे एवरी 6 months या 1 year का प्रॉफिट देखते हैं, राइट? अपना किस्मत ही खराब हो, राइट? इवन व्हेन आई डू द बैक टेस्टिंग, मेरा बैक टेस्टिंग में एक सिस्टम था, 2 महीने बैक टू बैक लॉस दिया, देन it went to the peak actually. तो वो पेशेंस नहीं होता। सॉरी गाइस, आई टुक सम टाइम, बट आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस थिंग बिकॉज आई लव डेटा। मैं फ्रंट टेस्टिंग करता हूँ कल से, द मोमेंट यू मेक इट लाइव, एंड आई विल what do we say, right, experience on my own. So I don't even need Patel, I don't even need Patel team. मेरे पास पूरा टेलीग्राम पे डेटा पड़ा हुआ है, I can test it for 6 months, 1 year, 2 years. Yeah, एग्जैक्टली, please keep doing that. वो सबके लिए अप्लाई करेगा, करेक्ट? Absolutely, yeah. ಹಲೋ, हाँ सुदर्शन, गो ऑन. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಅನಲೈಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಅನಲೈಸರ್ ಫಾರ್ ಡೇಟ್ 29, ಐ ಮೀನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಟ್ 29 January, the long entry, in the long entry it shows the open price 123, right? Is it the entry price? Yeah, 123. That's wrong, I'm sorry. Correct, thank you ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ. Because I ಅದು was ಸ್ಪಾಟ್ checking ಪ್ರೈಸ್ that ಇರಬೇಕು, ಅದು ತಪ್ಪದು. ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ ಓಪನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ರಾಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು because ಸ್ಪಾಟ್ I ಪ್ರೈಸ್. checked this long entry price and long exit, and the difference was 180, and the price was here some 5,000. The profit was 5,000 because the difference. ಇದು ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್. Okay. Then the second thing is, last week ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, I think 2 days there was a big negative. I think ಅಂದ್ರೆ if we check from 27th, correct. I think one is 14,000 something and 10,000. So I mean in 1 week ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ 30% ಐ ಮೀನ್ ಓಕೆ 100% ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಹಾ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಒಂದ್ ದಿನ ಅಂತೂ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿವಸ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ 30th. ಓಕೆ ಫೈನ್, Sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ Sir, thank you. ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 9:40. Okay. ಪ್ರತಿಭನ್. Yeah, hi, Patel. Hi. So the Hi. subscription fee you mentioned is for the completely automated algo. Not complete automated, for notifications, correct. When we automate Okay. it entirely, we may change it again at that time, because then we can control the number of lots and things like that. Okay, only for the notification it is 499. Correct, because we don't have control on the number of lots anyone can execute, right? So that's why I think a middle, pricing, I think that is what is understood. Again, please wait till we announce it or it comes on the website itself. सर इसको Alright, यूज कब and से the- कर पाएंगे सर? सर प्लीज सभी लोग रुकिएगा, मैं आपका नाम लूंगा, आप हैंड रेस करके रखिएगा प्लीज. हाँ प्रतिबन, गो. Yeah, one last question. So the notification we will be receiving in the next few days is for the ITM 4, right? No, notification you will essentially get whether you will go long or go short. You want to execute in ITM 2 or ITM 3 is your decision. The Got it. notification will essentially say go long or go short. Got it. Yeah, understood. So if you could provide some technicals about this strategy, right? How is the signals, based on what? I understand it is purely based on volume, Huh? but how are we giving the signal? Like based on any average or? No, it I is would all like to based understand on how. platform things only. There are multiple things that are combined. Even if I explain also, like I said, now even if I give you the strategy, it will be difficult to follow it. It is based on, for example, trend line, and then it is based on sell volume at strike level. But then that is something that you already have, Pratibhan. It's not, you have it for more than a year now. So even if I explain to you, I doubt anybody will be able to follow it that easily. Got it. So when we automate, right? For we don't need example, I'll to- ask you markers. Markers, for example, you don't know how the markers work, but you know how markers are essentially what markers are doing, whether doing a good job, bad job, when they are working, when they are not working. This is something similar you can understand. But then we have done a back testing, proper back testing for this. That's why it is a little different. That's why it is special. Yeah. Yeah, I agree with you. So only thing is, when in the future, if SEBI or if any organization, right, if they ask us about the algo we automated, we need to know the details. Right? That's the reason. So, okay, there are two things. One, we can either do it as a black box algo, or we can do it as a white box algo. That's what I understand, at least from what my legal team has told me. We are figuring out whether it has to be a black box algo or a white box algo. Right now, this is like a notification that is coming from, let's say, trading, right? Something like that. An indicator we have created, and you're getting notifications for that indicator. Now, the indicator name is Trend 75. That is the indicator name. Trend 75109 is the indicator name. That's how you can look at it, essentially. Okay, thank you. Thank you. Done. No, 1 second, Shankar ಅವರೇ, ಒಂದೆರಡು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಮುಗಿಸಿ. ಸಾರಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. Okay. अजय बोलिए. हेलो सर. एनालाइजर नहीं आ रहा है वहाँ पे मोबाइल पे. मोबाइल पे एंट्री एनालाइजर नहीं आ रहा है क्या? एंट्री एनालाइजर नहीं आ रहा है. हाँ ठीक है, थैंक यू, हम लोग वो चेक कर लेंगे. डन. और ये जो ऑटोमेशन वाला कब तक आएगा सर? वो पता नहीं यार, वो हम लोगों को पूरा वो लीगल टीम के साथ काम करके वो सब करना पड़ेगा. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, शायद कब 2 महीने लग जाएंगे, पता नहीं. इसीलिए हमने सोचा कि नोटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं बोलकर. और वो जो सेलिंग वाला क्या, उसका कैपिटल कितना रहेगा? सेलिंग का जो लॉन्च हो रहा है 2 दिन के बाद, सॉरी, वो एक उसमें लॉट अगर से भी होता है.
अगर आप उस अभी जब लॉन्च करेंगे तब आप फिर से एनालाइज करेंगे। अगर आप नेकेड सेल कर रहे हो तो नॉन एक्सपायरी दिन पे 2.25 लाख रहेगा। एंड अगर आप हेज कर रहे हो तो 80 से 85,000 के आसपास रहेगा। वो दोनों के लिए हम लोग देखेंगे, मतलब शो दिखाएंगे आपको। 2 दिन के बाद आएगा ना ये अपना सेल का। इसके बाद इस सेल का 2-3 दिन के बाद आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं आ क्या? जाएगा, कल परसों तक हमको डेटा इसी पेज में, आल्गो वाले पेज में आपको दिखाएंगे। और फिर वो इसका कितना सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा उसका सेल वाले का? मेरे हिसाब से दोनों के लिए वैसे ही रहेगा, अलग कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से दोनों के लिए 4,999 ही रहेगा। आप किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके बेसिस पे रहेगा। मेरे हिसाब से उतना रहेगा। ऑटोमेशन होने के बाद 1 लॉट से भी होगा वो? ऑटोमेशन होने के वो बाद पता अभी तो नहीं, मुझे नहीं पता फिलहाल। अभी बात करके कोई फायदा नहीं है अजय भाई, जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। ओके हाँ डन। ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನೀವು ಸಿ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ, ಆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದಾಗಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಿ ಬೈ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದು? ಹೌದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಅನಲೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಿದೀವಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಇದನ್ನ ಡೇಟಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಲಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಆತರ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಂತ? ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಾನೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆಲ್ಗೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ 915 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ಗೋ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು. ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದು. 4 ಏನೋ ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಳ್ಸಿದಂತೂ ತುಂಬಾ ಸರ್, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ದು ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ನನ್ಗಂತೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಆಲ್ಗೋ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಂದೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಆಲ್ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನಾನ್ ಕಂಡಂಗೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಆಲ್ಗೋಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಗೋ ಇದ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೀಮ್ಗಂತೂ ನಂದೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Patil, one final question. Can you quickly tell us what is net PL and gross? I mean, maybe quickly. I did not understand. Net and gross. The profit and loss. Net profit and loss and gross. So gross is per lot. You will see here. This one is gross. Okay. So this is gross for one lot. Gross is always for one lot. Net is then you decide how many lots. If you want net for one lot, 2,67,000. Got it. Multiples of 50 lots. Depending on lot, it will change, na? That's why. So now the net profit also will consider the STT brokerage, right? I mean the weight calculates for the growth, even for 1-2 lots. Okay, makes sense. Yeah, it depends on the number of lots. It changes, right? And one final question. I know you'll not like this thing, but see, there are different type of alag customers hote, right? So for me, 1,049% in 13 months, right? It is huge basically. So if I tell you, Patil, I don't need this much of returns, I'm okay with, honest I'm telling, 100% per year, right? So you wait for sell. Wait for sell. I'll tell you, right? And even selling, see, I mean, 100% from selling, I'll not go, Patil. Honestly, I'm telling, because I know, right? Forget about selling, right? I mean, if I tell you, right, I want only from the Vega positive, only from the option buying 100%. I mean, can you recommend? Because see, if my rate, see, low risk, low reward, right? We the will same get thing, you right? one for you. We will do one wherein the equity curve is actually much better. I think I can get you one for sure. Please,
Yeah, I would be the happiest one to subscribe for that. Even though I'll be like subscribing for this thing also, but I mean, if my return expectation is 100%, which is still huge, I believe. I mean, per month it would be like 7 or 8%. Yeah. Ravi, Let look me at know, entry bro. analyzer. You look at entry analyzer. I'm telling you, Absolutely, you I'm will excited. Yes, start observing. tomorrow morning I'll just jump on your Analyze. deal once we get the access. Yes, yes. Just click on entry analyzer. This is available free. You can just analyze. Look at entry analyzer. I think that will answer a lot of your questions. And the good part is like you said, you have considered the STT, you have considered the brokerage, and top of that, you're giving the profit. Let me. Right, you can expect too many issues, Patil, because you know that I come from I testing can. background. Of course, of course. Please do. I'll be happy. Before we launch, if you can tell me something that is very wrong, right? I'll be more than happy because we do not want to release anything that has even 1% issue. We want to be very, very sure about this. Absolutely. That. Amal, I think. Yeah, so tip question. So we were discussing about IT2 and IT4, right? So what was that? This is basically which strike do you want to buy. So the system essentially, so there are any algo rate has two parts essentially. One is essentially it is deciding whether to go long or go short depending on, let's say, an indicator or volume, whatever is its base. It is essentially saying, okay, now I should go long. For example, super trend turns green, I will go long. Super trend turns red, I will go short. Let's say simplest example. The decision engine is essentially saying go long or go short. But then once you decide go long or go short, will you buy ATM? Will you buy OTM? Will you buy ITM? That's a decision you have to take. Depending on what you buy, the performance will change, correct? So we are showing you for each how the performance is. For example, for ATM, for 3 lots, actually, if I go back to same 10 lots, it is essentially giving you 16,64,000 for ATM. Okay. That is the returns for ATM strike. If you are buying at ATM strike, and equity curve is like this. Now, if you ask me, I'll take this more than ATM 4. I'll happily take ATM because more liquidity is available, obviously. But then it's up to you. You decide whether you want to take ATM, ITM 2. For each of them, we have given you how it will perform. That's all. The decision is same for all of them. For all of them, the entry analyzer will decide at the same time. All right. So as soon as we get a Telegram indication, we need to choose from any among this and we need to manage. Not from this. You first decide which one is your comfort. Whether ATM, ATM1, ATM2, ITM1, ITM2, ITM3. That you decide now itself. Sit and analyze this for tomorrow. You decide which one you want to take. For example, ATM2, I would say would be the sweet spot. Okay, ITM2. Once you decided, once you then, if the alerts start, let's say, in a Telegram, once the alert starts, you always go with ATM2, don't change it. Okay. Okay, so based on this Telegram integration, we need to manually execute this in our terminal. You have to execute it, correct. You will have to execute it in whichever broker of your choice, correct. It's like an indicator giving you notifications like TradingView does. So one last question. So why you are saying that always choose that same, once I selected ATM or once if I selected ATM1, I should always go with that? May I know the reason behind it? Because otherwise, let's say at the end of 1 month, you want to see what is your P&L in your account, and then you will want to come back and compare that with whatever P&L we are showing. We will continue to add P&L every month, here. Oh, okay. You want some base to compare, no? If you're switching in between, how will you compare? Got it. End of the day, you will want to believe, you will want to be compare, you will want to be able to compare, and you will want to be able to say, okay, whether did it perform at least close to what this platform is showing. For that, there has to be some consistency. That's fine. Sure. Thank you. Got it. No problem. Abhinav. Yeah, Patil, sorry, I just missed. What was the difference between net and gross PNL? I mean, somebody spoke and I missed that. So the gross PNL, Abhinav, is essentially no taxes, no brokerage, nothing. In the net, what we have done is we have taken out 40 rupees for each order, 40 rupees for each order. That is for both entry and exit put together. 40 rupees brokerage is taken out, and then the STT and other taxes calculation is taken out. That is net. So, okay, so the gross PNL changes when you change the lots, or? No, gross PNL doesn't change. No, gross PNL you just multiply. If you have 10 lots, you just multiply. How does it change? Okay. That's why we are showing you only one lot.
For only one lot we are showing you gross. हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता है ना, 10 lot पे करो तो भी 23 लाख हो जाएगा, क्या फर्क Okay, पड़ेगा? so gross P&L is for one lot, and net P&L, where whatever lots you choose, that is the net P&L. It has to, na, because brokerage will vary accordingly, na. All right, all right. The second suggestion was that, I mean, once you've kind of start with this notification, is it possible that for free users who don't take up the algo, is it possible to pass those messages a couple of days later? So, for Yeah, end of example, the day. We are thinking to publish that end of the day. yeah, end of the day you Moreover, can publish. even if you don't do it, you will always have it here because this will not change. That's how our platform always has been. You will change. You come back here and verify, na? Because Yeah, you but know, for a regular user, you kind of have a 2-day delay, right? No, end of the day I'll show you. No problem. We will show it to you end of the day itself here. You come to entry analyzer, on that day you see what has happened. End of the day you can come and check it. I'll ask the team to publish it. Because of what use end of the day, even if we show you. Yes, yes, that would be good. At least, I mean, people who kind of don't take the subscription at the beginning can kind of look at it for 1 month and then decide. Absolutely. Right. And then because there are people subscribing, they will vouch for it. They'll know that okay, this is correct because they have taken, they have got the message at that time. Understood. All right. Thank you. Yeah, no problem. All right. I think we had from 60 plus people, I think, and then slowly people dropped off. I think we now have 20. I'm assuming. Sir, only one question. In between, we can change the number of lot in between after taking execution. My suggestion is change it at the beginning of the month. You change it. Don't change it in between. Okay. Once in a month. That's it. That is so. It is allowed or not allowed, sir? We have nothing to allow or not allow. No, it is everything is in your control. The point is, you come back and when you come back and compare in the platform, we will keep showing you saying that you made 100% profit. But when you come back and compare, how can you compare and see that you have made 100% profit? For that, you'll need to have consistency. No, that's why we are saying 1 month, at least stick to it. Okay. You understand? So that you can come back and say, oh, platform is saying we made 70,000 profit. In my P&L, I at least had 65,000, maybe somewhere close, good enough. But if you switch the number of lots, you can't compare. No, it will become difficult. Another one question, sir. I will take in each strike price. ATM 1, 2, 3, 4, and another one. Yeah, each 2 lots for 1 month. There is no issue. I'm sorry. Can you repeat that? ATM strike price, sir. ATM strike price and ITM 1, 2, 3, 4. Okay, 5 strike price I will take in with each running with 2 lot. There is for different charges for this one. No, nothing like that. See, the system will only tell you whether it is time to go long or go short. That is, buy pressure is there or sell pressure is there. That's all the system will tell. Complete control is in your hand. You can take you can take 5 lots of ATM, 5 lots of ITM 1, 5 lots of. We have no control. There is no way we can control that. System cannot limit that. It's your risk. You have to decide. Okay. Because other algos we can't able to change even our stop loss also. Correct. That's accordingly, stop loss also you will have to decide. Correct. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. ಹೇಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ. ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 1 ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇನಾ, 5 ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇನಾ ಚಾರ್ಜಸ್? ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ 5,000 ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾವು ಏನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಾನು 5 ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 10 ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಎನಿವೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಏನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾರ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಏನಾಯ್ತು? ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ 4,999 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 2-3 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 4,999 ಅಂದ್ರೆ 5,000 5,000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ ಮಂತ್? ಹೌದು. Okay, sir. Thank you, sir. No problem. Ravi, I think you have something else. Hi, Patil sir. Thanks for giving this demo and appreciate your patience, man. I mean, you are doing an amazing job. Thank you. So I have one question, Patil sir. So the first one is the signals what you are showing in this algo, right? Is it different from the markers that is already available in the platform? It is. Okay. So in that case, don't you think that you are just upselling this? Because
we paid for that marker, right? And if there is a better marker, don't you think that we should be showcasing that in your 915 platform? Yeah, so if we price it, if we package each marker as a separate pricing, then we can show it on the platform also. I mean, No, won't make a no, difference. but no, this is not fair actually. To be honest, I mean, we were depending on the marker that's existing in the So I'll 915. tell you why, Ravi Shankar. And thanks Yeah. for asking. We always accept, any kind of cross questioning. So happy, more than happy. The point is this: for a company's point of view, for a marker, right? The amount of research and time it takes is essentially to analyze. Let's say we have got strike sellers. So, for example, if 3 are turn red, we may show the marker. Simple. We are not doing back testing. We are not saying that this works 100%. We are essentially saying we are showing you the sell pressure or buy pressure. Okay. For us to develop a strategy, to be able to back test it, to be able to limit it, not just back test it. Ask Ravi, he will tell you. He's been doing it for I think 2 years now. To be able to limit it to just 700 trades per 13 months. And to be able to then get a performance like this, and with an equity curve like this, the amount of research that it takes is crazy. Okay. Agree. Now imagine if somebody is doing all of that. When they present it to the when they present it to the, first of all, I don't know how many such algos would ever come to retail. But if it is coming to retail, don't you think it is only fair that it is priced accordingly? Yeah. So basically, what you're saying is that, right, the current markers are not kind of optimized, because you have a new marker, new way of looking at the strategy, isn't it? Patil? Well, I wouldn't say they are not optimized. The current markers, they have not been back tested thoroughly as an algo would do. You understand? We have not done a back testing of it and then tried to sit and optimize and continue to do the research for thinking like it has to be an algo. If I do with markers, I would end up with 2,500 or 3,000 trades, for example. It's not as easy to say, okay, now let me sit and just try to optimize the markers, right? Wouldn't work. Believe me, there is months and months of effort. Again, even with months of effort, you will not get this. I will ask you, I will only request you to explore all the algo platforms that are available. Find out option buying algos. See for 1 year the kind of results that they have shown you. Yeah, it's not it takes a lot of profitable, effort. I know for sure, right? And No, nobody's it's not profitable. profitable. I'm sure there are plenty that are good. Believe me. Yeah. Some of them are not coming to retail. Some of them are in the not in the retail sector. They're good. Okay. I wouldn't say we are the only best ones. I will not say that. However, I'm saying for anyone to come up with that, it takes a lot of effort. That's all I'm saying. Yeah. Okay, and that's why you are pricing it differently, right? I believe. So in this case, right, if what in say I will only subscribe for the Algo and I don't want 915 because anyway now I feel that it's not optimized. Is that an option for me? Oh no, that's again a wrong assumption. It is definitely an option. You can just simply subscribe to your indicator based notifications. That's definitely an option. Okay, To so I say- can get away from 915 platform subscription in the future. You can if you want, yes. But to say that 915 subscription is now not as effective as this is wrong, because I said in this call itself, the algos are still not efficient. They are not efficient. Look at the entry analyzer. They are not efficient. If you are a good trader, you will be able to outperform what the algo is doing. Neither is 915 an optimized entries, right? So Not in that that- case, if you look at the trade-off, the algos are better in this case, isn't it? So the way I look at it is, if you know how the platform, so this is all based on the platform data itself. We are not using any indicators. That I'll be honest with you. Now, when I see the algo, when I see the entry analyzer, and when I try to analyze, for example, on a sideways day, I know that I could have avoided a lot of trades if I am manually trading. And on some days, I would hold a trade longer. The algo is not able to do it. And there are some days where it is missing a good, it is missing a good, for example, budget day you have seen, right? Oh, what a rally. Yes. Then algo should be able to completely capture that, but it didn't. Yes. You understand? Yes. As a trader, if you are, again, this is all with the platform itself. If I do another strategy, it will be able to capture that particular rally, for example. If you are a trader, if you know how this data is working, I think you can absolutely outperform whatever the algo is doing.
these algos are still very inefficient, in my opinion. Extremely inefficient, despite the result that you are seeing, they're extremely inefficient. Yeah, see, but coming to the point, right? I mean, sorry, I know I'm taking a lot of time of others here, so I'll just park those probably for an offline discussion with you, Patil sir. So I'll just leave it there. So the second question is, can we get a Excel download of the current algo trades, like days in which the algos got triggered and what's the profit and loss? Because that will be easy for me to go through an Excel sheet instead of choosing the date, right? I will try. I don't know if I'll be able to give you an Excel sheet. However, what I'll ask you rather is what other insights you need. If you can tell us, we will be happy to add them because it will help everybody. No, I just need a download of the Excel file for I'll the try. I'll backtesting definitely. data. I'll ask the team for sure. Yeah, because it will be easy for me. Now I have to go and pick a date from a drop down. Instead of that, in Excel, it's all in rows. That's the reason. Yeah, understood. No problem. I'll definitely ask the team. Yeah, sure. Then that's all what I had. Thanks, Padit. Yeah, no problem. So this one, you can understand English, right? I can speak in English, right? No, yes. So this one, it is like an indicator. Okay, I'll share the screen again. So where is the screen? So this is like a indicator. Like for example, Vishankar said, right? We already have got markers, pink and blue markers. Similar to that, we have now built a strategy, basically a kind of a indicator system, which based on the platform is taking trades. It has done backtesting, it has done forward testing also, and it is taking trades every day based on momentum, based on the same data that you have it in the platform. And then how it is taking a trade, you have it here. For example, on this particular day, it took a long trade here, exited, one short trade, and it exited here. Again, long trade, exited, long trade, exited, long trade, and finally exited. On a different day, again, same. Long, exited, short, did well, long, did well, another long trade. That's how it is taking trades based on predefined rules of, sell volume, depending on trend data, depending on futures volume, etc., etc. Okay. This we are saying it will be available for you as a notification service, as alert service, like you have it in TradingView. Like TradingView alerts are there, right? Similarly, these alerts will be delivered on Telegram and then eventually on mobile phone. That's all we are saying. Hope I was able to answer. அந்த நோட்டிபிகேஷன்றது தான் என்னன்னு கேக்குறேன். காலா இல்ல புட்டா இல்ல இந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸா என்ன சொல்ல வரீங்க? So the strike price, we will not tell you strike price. Essentially, what it will say is, I'll tell you. For example, I'll tell you. Simple, I'll tell you. I'll go to a day where it is a little easy. On this day, on 11/18, you will get an alert saying buy pressure is detected, for example. That's all it will say. If a buy pressure is detected, what will you do? You will do a call buy. Right. Right. If we say sell pressure is detected on a different day, if we say sell pressure is detected, you will do a put buy. Okay. Whether you want to take ITM, ATM, or ATM1 or ITM2, you have to decide first itself, saying, okay, I will always take ATM or I will always take ITM depending on how it performed. Okay. The notification, the alert will simply say buy pressure detected or sell pressure detected. Depending on that, you can decide whether you want to buy ITM2 or ITM1 or ATM or ITM4. You can just do a call back. That's your decision. We are showing you for each ITM and OTM how it has performed over 1 year. That's all, 13 months. Understood, right? Yes. Any other question? நீங்க தனுஷ்குமார் கிட்ட கொடுங்க, நான் தனுஷ்குமார்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். We will do one more call with Dhanush. Yeah. Sure, I'll ask Dhanush to do one more call for sure. One good call we will do. Yeah. Yes, sir. Thank you, Arun. I'm happy I'm able to understand Tamil. Thank you, Yes, sir. Understand. Yes, understand that thing. Yes, sir. We are understand. I would really want to speak Tamil on some day. Tamil and Malayalam, I really want to speak someday. Sir, no issue, but anyone can explain. யாரோ ஒருத்தர் explain பண்ணாங்கன்னா போதும், அவ்வளவுதான். ஏன்னா என்டையரா Hindi we can't understand. That's the reason. But your indicator is a very excellent. No one can given this volume based this much perfection. Okay, I will that one. Accurate.
Correct. Thank I you, would thank you. suggest you guys verify it again. I wouldn't say this is the best. We wouldn't claim anything like that. Please verify. Please do analysis. And I'm sincerely hoping that we are able to do a good job for everybody involved here, to be honest. Okay, sir. Okay, thank you. But Thank you. நாளையில இருந்து அது Patil, லைவ்ல one final வந்துருமா சார் question. அது 1 second, Ravi. Sorry, go on, Arun. நாளையில இருந்து லைவ் ஆயிடுமா சார் Not From tomorrow. tomorrow, the signal will come in. From No, not when it tomorrow. is started, sir? We will tell From you in when, sir? Telegram or we will tell you in Discord. Senthil, you can repeat the same in Tamil if possible for Okay, Arun. sir. We will either we will let you know as soon as it is available. We will let you know. Just join the Telegram channel. No, 915 Trade Yes. Telegram channel is there. Okay, sir. Okay. Okay. The Discord Telegram for channel. Discord, any ID is there? Yeah, in the chat Discord you is have. there. So in the chat, Okay, if you please see the share it, chat, sir. see the chart Okay, of Teams. You have got both Discord and Telegram links there. Okay, sir. Okay. Arun, hope you understood, right? We will Yes, tell you sir, as yes, soon sir. as it is available in Telegram. Anyways, it will start coming automatically. ஓகே சார் ஓகே சார் Okay, 1 week I think we'll definitely deploy it free anyways, and then we will start the paid plan. Yeah. ஓகே பட் இப்போ நாளைக்கு அங்க லைவ்ல ப்ளே ஆகுது நெஃப்டி ப்ளே ஆகுதுன்னா நம்மளும் அப்போ இதுல அனலைஸ் பண்ணலாம் Yeah, you can analyze. Don't take trades, please. Analyze it at least for a week, and then you can decide to take trade or not. Yeah. ஓகே சார் Okay, sir. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் Thank you. Yeah, Ravi, Thank you. you were asking something. Thank you, Sneh. Yeah, so Patil, I'm not sure, like, I mean, if you have any sort of obligations or constraint as such, right, in terms of sharing the Excel, but definitely, right, I can see that you and your team has put so much of effort, but just see through that. If we can share that Excel sheet. See, I mean, I don't mind going through random entries. I'll just test that basically. But as one gentleman said that if you have that Excel sheet handy, we can just put the pivot table graph and see, right, in last 782 trades, right, which days our system it maximum risk, or which are the days which it the reward. I mean, you know, right, all those calculations we can do with ease basically. Yeah, understood. But think Yeah. and let us know. Yeah, that would definitely help, Patil. Yeah. Definitely. Like I said, I'll put this to the team. You know, as they decide, we'll definitely be able to make it available. Sure. Yeah. Awesome. I thought 1 hour because the way you have presented, right, it clearly showcases that. I mean, you might have tested it hundreds and thousands of times, because even when I do the back testing, right, I mean, I usually test it with minute level of data, right. I'm eager to see that result in an Excel by just put the graph and see, right. Absolutely. Well done. We'll check with the team. If it's available, we'll put it in the website itself. Yeah. Awesome. Thank you. Thank you so much. I think we are left with 14 people. But yeah, thank you everyone. Thanks for spending 2 hours. We'll connect again. This is not going to be the last call. We'll again connect. Sure. Next week. No, this week only. By Friday maybe we'll connect again. By then we'll definitely have sellers also. We can discuss on that. So thank you.